Assalamu alaikum and good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to this wonderful event. Before starting further, I will request Hafiz Saad to recite few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Am I audible? We often listen to the statement that education is the key to success. But how, when and where to use that key? The practical aspect of that key is knowledge, which is mostly missing at the students, and how to use that education to build their career, to make them successful. For this, we are having a success story between us. Mr. Salman Mallik, Vice President, Public Policy and Regulatory Affairs, Jazz Mobiling, a well-respected telecom industry expert with a diverse portfolio comprising of corporate strategy, public sector policy making, and people management. Mr. Salman has profound understanding of both local and global cellular and fixed line business dynamics at the industry as well as policy level. He has a proven track record of over 18 years of experience in strategy development and implementation in private sector and public sector organizations. And the most amazing thing is, he is also Hamdardian. I thank you, Career Pakistan. This event is part of the series of the events we are collaborating with Career Pakistan, and we are having Ms. Faria here. She is representing Career Pakistan. Thank you for your collaboration. I request Mr. Salman Mallik to please come on stage and brief us regarding the knowledge aspect of the career. Because of the teaching experience that I have been having for a very long time, generally I don't need to use mic. So thank you very much, Muneeb, and thank you, Career Pakistan, for giving me this opportunity. You spilled the beans. I actually wanted to share this at least pleasant surprise for myself, that my association with this institute or university really dates back to 1998. I think it was March or April. That's the only thing I'm missing out. I just done my coursework with NUST as an engineer, and then I thought I cannot be a great engineer, so I need to do something else to excel in life. जिंदगी में ये ज़रूर रहा हमेशा से कि अगर कोई भी काम करें, और चाहे वो एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, करिकुलर हो, नॉन करिकुलर हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, be good at it. So that was my sort of mantra throughout my life since very young age. So जब मैंने इंजीनियरिंग की तो शुरू में 14 सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिल गया, फिर पता चला कि ये तो गलत हो गया. When I was getting into the engineering university, my only choices given by my parents were either pre-engineering or pre-medical. So I thought ड्राइंग अच्छी नहीं आती, मेडिकल ज़रा मुश्किल हो जाएगा, so engineering कर लेते. So that was my only motivation to get into pre-engineering. उस ज़माने में ये even MBA is really not there. इससे नुकसान ही हो रही बातें बताने से कि आप कहेंगे कि maybe this is like somebody from the stone age. अभी पुरानी बात लगती है, मेरी एज पता चलना शुरू होती है, but anyway. So I went in engineering. As I said, I wasn't the greatest engineer. I had a lot of my class fellows, my colleagues who were much better engineers. Course to pass कर लेते थे, but engineering from a design perspective and all, I don't think I was ranking amongst the best. So I decided to do something else.
and that's something else just occurred to me but with my final project which I did on engineering management. I mean, the other work in this management sort of field attracts me more than a lot of other things that I was studying during my engineering. So I started looking around. At that time, two institutes that really came to mind were IBA and LUMS. Asked both. They said, yes, we like your profile, but what we need to do is to have that engineering degree in your hand and not the detailed mark certificate that shows that you've completed your degree requirements. So I was thinking whether to spend another 1.5 year or 1 year waiting for that or go for something else. And suddenly, we had this advertisement by a university called Hamdard University. Hakim Said, may Allah bless him, and just they had a good name. They were starting, they were just starting this university, the first campus, first batch, and I just applied. Had to go through a test and all. Maybe abhi bhi test aap log dekh hi aate honge. Got the admission, so that is where the association started. So for me, it's a pleasure to be here, and as I said, it's a privilege as well. Now, what I really wanted to share, obviously, are some of the things that I've learned over the years, some of the learnings that I feel have been important in where I have reached to, and also maybe some of the things that you can consider using when you move on. I'm not sure, is this the final batch students or is it like a mix of people? Mix of people. Okay. So a lot of time when people are about to graduate, and the students that I'm teaching at Nursery School these days are the final semester students. So I see a lot of anxiety, a lot of anticipation of what's going to happen after we leave the university. So that's very natural. Nowadays, with the likes of Career Pakistan and your faculty and all, there might be much more counseling activity that is going on. At my time, I just told you the reason I went into engineering school. So there was not a lot of ideas how to navigate through your career, what are the things that are really going to help you, what are the things that you need to avoid, and all those things. So idea of today would be more like just sharing some of the things and seeing how do we make some sense out of it. I would really appreciate if there are any things, you don't need to wait for the slides to finish. You can ask me any question any point in time. It should be as interactive as possible, but then we'll also have time at the end of the session. So before we start off, I'll just tell you what I have been up to since my MBA degree. So I did my engineering from NAS, did my MBA from Hamdard, first batch. Then I thought, what should I do? So I was like, ये तो ऐसी रेयर कॉम्बिनेशन हो गया पाकिस्तान में, उसको काम लोग इंजीनियरिंग और एमबीए दोनों कर रहे थे, उसको लोग मजाक भी करते थे कि अच्छा इंजीनियर अच्छा नहीं है इसलिए एमबीए कर रहा होगा, क्योंकि सच था. लेकिन that wasn't the reason. I thought of it and I searched around the world. उस वक्त ये गूगल भी इतने ज़्यादा नहीं थे, बहुत सारे और सर्च इंजन्स होते थे. So मुझे लगा कि इंजीनियरिंग और एमबीए would be a good combination to have. तो जब मैंने एमबीए कर लिया and मैं आगे इनसे कह रहा था प्रोफेसर साहब से ये शेयर मैंने कि मैं आज तक अपने मेडल्स का वेट कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में देने थे, आज तक नहीं दिए. So I thought that I was a great graduate. I did my score, my first position in overall MBA. I was the gold medalist in finance and MBA gold medal, which I still have to receive. So, but what happened was कि मुझे उससे confidence बहुत ज़्यादा आ गया, maybe to a level of extra confident level. मैंने कहा अब तो मैंने ऐसी चीज़ कर ली है जो कि बड़े काम लोगों ने मार्केट में की हुई है, इधर यहाँ इंजीनियर मिल जाएंगे, MBA मिलेगा, मेरे जैसा बंदा काम मिलेगा. So the root awakening was कि जब मैंने कर लिया ग्रेजुएट तो मुझे कोई जॉब ऑफर नहीं आ रही थी. ये पता नहीं क्या मुझे लोगों को इस तरह की मदद मिलती नहीं है, मेरा पता नहीं होगा इसके इनिशियल ऑफर आए. And I had very high expectations. So लोगों का ये ख्याल था कि इंजीनियरिंग करके एक खास पे स्केल था उस वक्त, एक MBA का एक खास पे स्केल. तो मैं हमेशा देखता था कि अगर दोनों हो तो पता नहीं कितने मिला के भी कितने मिलेंगे. So as I said, root awakening, I started applying. इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आती थी. मैं हर बंदे से कहता था क्या हो, जब कोई कहता सीवी ठीक नहीं बना रहे, कोई कुछ कहता था. आई वाज़न्ट श्योर व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग. सो आई स्टार्टेड टीचिंग. मुझे इत्तेफाक से बीइंग अ रीजनेबली ओके स्टूडेंट, आई वाज ऑफर्ड कोर्सेज. पहले मैं टीए रहा ड्यूरिंग माय लास्ट सेमेस्टर्स एंड देन आई वाज टीचिंग माय सेल्फ. आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. सो मेरी पहली इनफॉर्मल टीचिंग स्टार्टेड व्हेन आई वाज डूइंग माय ओन FSC. So I started teaching O levels and A levels in that time. Just shocked था मुझे, वो आज भी कायम है अल्हम्दुलिल्लाह.
तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया एंड दैट वाज गेटिंग टू मी, मुझे लग रहा था कि ये काम अच्छा है, मैं पढ़ाता रहूँगा, बट आई वाज आल्सो थिंकिंग यार पैसे ज़्यादा नहीं मिलते और मैं तो इसलिए 2 डिग्रियाँ तो नहीं की थी मैंने टीचिंग करनी, ग्रेट प्रोफेशन, बट आई जस्ट थॉट आई वाज गोइंग टू डू समथिंग एल्स। टुक मी 5 months, तो मुझे तकरीबन 3 या 4 महीनों बाद पहला जब इंटरव्यू कॉल आई, आई वेंट टू दिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट एडवाइजरी सेल उसका नाम था, वेंट फॉर द इंटरव्यू, उन्होंने बड़ा इंटरव्यू किया, बड़े सवाल जवाब किए एंड उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, विल गेट बैक टू यू एज टिपिकली दे से कि इफ यू आर सिलेक्टेड। नेक्स्ट डे आई गेट अ कॉल, उन्होंने कहा जी आपको मुबारक देनी थी, आप सिलेक्ट हो गए हैं। अब जस्ट इमेजिन 3 months नो जॉब, फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट जॉब ऑफर, द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। मैंने कहा जी बड़ा खुश हूँ मैं, उन्होंने कहा कब तक ज्वाइन कर सकते, मैंने कहा जी आज ही कर सकता हूँ। आज उन्होंने कहा नहीं इतनी जल्दी ना करें, आप पहले अपनी ऑफर देख के उसको एक्सेप्टेंस दे दें। तो आई वाज लाइक, मैं सोच नहीं रहा था कि क्या मसला हो सकता है ऑफर में। उन्होंने कहा जी हमको 5000 रुपये देंगे, मैंने कहा नहीं इंटर्नशिप नहीं करनी मैंने, उन्होंने कहा नहीं जॉब की सैलरी आपको, मैंने कहा 5000, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा जी ये तो कुछ कम नहीं है, उन्होंने कहा जी यही मिल सकती है, मैंने कहा जी आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मेरे फादर बीइंग अ सिविल सर्वेंट, तो उनको बताया, उन्होंने कहा यार कुछ मिल रहा है स्टार्ट कर दो, मैंने कहा नहीं मे बी दिस स्टार्ट इज, एंड दैट वाज आई थिंक द राइट थिंग फॉर अ लॉट ऑफ अस, मे बी यू स्पेशली। आई जस्ट हैड टू मेक अप माय माइंड, मैं जाता एक पब्लिक सेक्टर था, बट आल्सो आई wasn't too excited about it, so when they made the offer of 5000, that was sort of my decision point where I thought not doing this, and I alhamdulillah मैंने खैर जिंदगी में कोई भी डिसीजन रिग्रेट नहीं किया, बट दैट डिसीजन स्पेशली आई नेवर रिग्रेटेड कि मैंने ना था। खैर उससे हुआ ही कि मैंने जॉब तो मिली है लेकिन फिर लेवल नीचे आ गया एक्सपेक्टेशन का। देन द नेक्स्ट थिंग आई डिड वाज फिर एक और जॉब इंटरव्यू की कॉल आई, दैट वाज अ पेट्रोलियम कंसल्टेंट। पेट्रोलियम इंडस्ट्री का हमेशा से अभी भी है कि थोड़ा हाई एंड पे स्केल्स अच्छे हैं, और इसके बगैर आवाज आ रही है मेरी, सो केस में अगर यहाँ से मूव कर दूँ तो आपको आवाज आ रही है पीछे तक, इसलिए कह रहा हूँ आई डोंट वांट टू जस्ट स्टैंड। तो जब इन्होंने पेट्रोलियम कंसल्टेंट से इंटरव्यू किया, उन्होंने बड़े सवाल जवाब किए, जी रिग्रेशन क्या होती है, ये क्या होता है, मार्केटिंग क्या सीखते हैं, बड़े सवाल जवाब बड़े अच्छे थे, इंटरव्यू वाज वेरी इंटरेस्टिंग। देन दे सेड कि अच्छा ये डन, अब मैं उठने लगा, उन्होंने कहा बट वी जस्ट वांट टू टेल यू कि वी आर गोइंग टू ऑफर यू, और आप कितना हाउ सून कैन यू जॉइन, आई सेड टुमारो। दे सेड अच्छा, तो मैंने कहा जी व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्होंने कहा 10000। सो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा जी थोड़ी कम नहीं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हिसाब से, उन्होंने कहा जी यही है, हम वी आर एक्चुअली कंसल्टेंट्स टू लॉट ऑफ कंपनीज एंड वी जस्ट वांट टू engage you and maybe the future holds better things for you, but this is it। मैंने कहा इसके अलावा कोई पर्क्स को बेनिफिट्स, उन्होंने कहा जी बस यही है, एक चेक मिला करेगा 10000 के ऊपर टैक्स काट के होगा। मैंने कहा मैं सोच के बताऊँ, थॉट अबाउट इट अगेन, अभी भी एक्सपेक्टेशन थी इतने पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, मैंने उनको भी ना कहा। सो देन आई वाज थर्ड इंटरव्यू एंड टेस्ट भी होता था उस ज़माने का, टेस्ट होता है इंटरव्यू, कॉमसेट्स एक तो आपने यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम सुना होगा, बट देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉमसेट्स हेडक्वार्टर्स। कॉमसेट्स हेडक्वार्टर्स इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज प्रेजेंस इन 21 और 22 कंट्रीज जो कि मेंबर्स हैं। उधर एक उन्होंने प्रोग्राम्स के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब निकाली, उधर टेस्ट इंटरव्यूज में अगेन अल्हम्दुलिल्लाह गॉट द ऑफर। उन्होंने कहा जी अब ठीक है, बड़ा एलैबोरेट था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी ऑफिस था F63 में, तो लॉट ऑफ थिंग्स वर लाइक टिक मार्क्स, अच्छी जगह ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी लग रही है, 21 मुल्कों में है, तो इसका मतलब बड़े ज़बरदस्त होंगे। सो दे मेड एन ऑफर ऑफ 11,000। सो द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑफर द प्रीवियस ऑफर्स वाज दैट आई सेड इमीडिएटली आई विल जॉइन, क्योंकि उस वक्त तक मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये 5 से 10 पे तो गया, पर 10 से अब 1000 की इंक्रीज आई, इसका मतलब मार्केट ऐसी ही है। सो बाय दैट टाइम लॉट ऑफ माय क्लास फेलोज, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, लॉट ऑफ माय क्लास फेलोज वर इनटू द इंडस्ट्री, all those only MBAs were already there, all those only engineers were in the field। तो मुझे लग रहा था कि यार मुझे 2 डिग्रियों में पता नहीं क्या फ़ायदा होगा। सो आई स्टार्टेड ऑफ हम्बल स्टार्ट। उन्होंने पहला जो दफ्तर मुझे लगा, मैंने कहा कहाँ बैठना होगा जी, वो इस तरह का तकरीबन इसी साइज का था, मैं बड़ा था कि काफ़ी कोई हैवी वेट को मुझे जॉब मिल गया, पता चला वो लाइब्रेरी थी। सो मैंने कहा तो लाइब्रेरियन को बैठना चाहिए यहाँ पर, उन्होंने कहा जी बस फिलहाल ये जगह यहीं बैठ। सो वेरी हम्बल स्टार्ट एंड आई वर्क देयर। अच्छा हुआ, एक्सपोजर अच्छा था, बिकॉज आई वाज इनटू अ लॉट ऑफ, इट वाज बेसिकली कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं
नाम से आपने सुना है कि it was a commission on science and technology for sustainable development in the south. So quite a development sector according to UN Charter. It's an IGO, intergovernmental organization. So a lot of good things about it. But obviously it was a lot of scientists would have much more to say in that. मैंने वहाँ start किया काम and then we thought कि work there somewhere. फिर मुझे अंदाजा हुआ कि development sector के अंदर मैं रहना, you know development sector there are a lot of is multilaterals there, UNDP, the Asian Development Bank, the World Banks, and ADB and all these development agencies. So I thought कि इधर अगर मैंने grow करना है तो maybe there's something that I'm missing. एक तो मेरे पास development की degree नहीं है, I'm an engineer and an MBA, but development की degree नहीं. But I also wanted to work. After 2-3 years, I said कि now I will have to move on. So and secondly, I just had this in mind कि यार मैं एक foreign qualification भी ले लूँ. So I applied around, got some scholarship offers and admissions. So मैं England चला गया, I stayed there for a year, then came back. वापस आया फिर वही गलत फहमी कि अब 2 या 3 डिग्रीज हो गई हैं, फिर कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करने आया, कोई एम्प्लॉयर अगेन कोई बंदा नहीं आया लेने, घर वाले ही आए. So I stayed. उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने कहा you just join us back, stay here till you find something that you do. उसके बाद बड़े-बड़े experiences. I can't go into all the details of the experiences of jobs and all, but I always have gone for interviews. आज भी अगर मुझे कोई इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, अगर reasonable मुझे लगेगा कि what I'm working, I still go for interviews. Not because I want to join or I want to leave the organization, because it always gives me a different perspective. अब इंटरव्यूज थोड़े फर्क हो गए हैं, उस ज़माने में सवाल जवाब होते थे सीवी को देख के, अब it's more like an informal discussion, but it's always a new learning experience. You get to meet new people and all, which I always encourage my students to do. Go meet people. If there's one thing that you cannot avoid and you should excel at is this part where you get to meet people, you interact with them, share some of the things, get to learn some things and make an impression. You never know where it's going to be of help. और इस नियत से नहीं कि आपने किसी का फायदा उठाना है, but just is the thing that you should make part and parcel of your everyday life. तो खैर anyway, so I moved on, worked there for some time, then joined. इस वक्त टेलीकॉम आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, 4G 3G ये सब कुछ. At that time telecom was just really taking off. जैसे कहते हैं ना, उस रनवे पे था, भागना शुरू होना था. So I joined the Ministry of IT and Telecom, worked there for 4 years, had a great exposure. मैंने बड़े-बड़े blunders किए हैं. So I just एक blunder share करता हूँ before you move on to some of the conversations. So we had a presentation to the Prime Minister of Pakistan. This is 13 years ago. जब मैं गया तो उन्होंने कहा कहाँ है प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा जी PM हाउस में, एक PM ऑफिस है जो ये सेक्रेटेरिएट है, एक PM हाउस है, उधर होगी. मिस्टर शौकत अजीज वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम. तो मैं जब गया तो उन्होंने कहा जी आप काफ़ी फासला है फ्रॉम द एंट्रेंस टू द ऑफिस. तो उन्होंने कहा जी आप लैपटॉप वगैरह तो यहीं छोड़ने पड़ेंगे. मैंने कहा इसके अंदर प्रेजेंटेशन है मेरी. उन्होंने कहा नहीं वो ठीक है लेकिन आपके पास कोई और चीज़ नहीं. मैंने कहा नहीं ये भी है, USB भी है, CD भी है, प्रिंट आउट्स भी हैं. सब कुछ आपके पास तो लैपटॉप छोड़ दें. मैंने क्यों, उन्होंने उस कमरे में लगा हुआ है सारा वो आपका, यू कैन यूज द स्लाइड. ठीक है चला गया. सो दे वर वन आफ्टर, रेलवे मिनिस्ट्री चल रही है वो तो खैर हमारी बारी है. तो द प्राइम मिनिस्टर ओपन द डोर सेड आज मिनिस्ट्री ऑफ IT. वेंट इन देयर, उन्होंने कहा चले शुरू करें. सो आई ट्राई टू यूज अ USB. उसके ऊपर आया देयर इज अ वायरस इन दिस कंप्यूटर, यू लाइक टू रीस्टार्ट, यस नो कैंसिल. मैंने कहा ऑफिस आई डोंट वांट टू रीस्टार्ट. आई सेड नो. फिर आ जाए मैसेज. मैं आज भी टैकी नहीं हूँ, ज़माने में बिल्कुल ही नहीं था. दूसरी दफ़ा आया, मैं कहूँ कैंसिल, कभी नो करूँ कभी कैंसिल. फिर मैं इतने में ऑब्वियसली दीज देयर वर 5 or 6 पीपल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर स्टैंडिंग. तो जी क्या हो रहा है. तो मैं इतना उस वक्त तक सोचे हो चुका था शेखन आपके. मैंने कहा क्या हो, मैं कहा जी आपका ये खराब है. उन्होंने उसको कहा कि इस मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ IT में ये हाल होगा तो बाकी मुल्क में पता नहीं IT कैसे फरोग जाएगी. तो खैर so I'm just telling you a lot of interesting. लेकिन what had caused, उन्होंने कहा फिर क्या करें. So I had the print out. So lesson at that time was कि you should have some backup plan. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे करता तो वो तो उन्होंने बाहर रख लिया था. अगर सिर्फ USB पे रखता तो वो भी नहीं चली, CD भी नहीं चली. CD इस वक्त यूज होती थी. So the only thing which really came to rescue was paper. Although we have really moved on from that non-digital age to a very digital age now, but that's what. और शुगर ये हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर was very बहुत स्पीड से निकलते थे. तो शुगर ये हो रहा था कि he was asking questions on the basis of number of slide.
लेकिन बोल तो नहीं रहे ना कि स्लाइड से ही क्वेश्चन है, तो वो थे स्लाइड 9 पे, मैं 9 पे पहुंच रहा था, बाकी को 3rd पे था, तो 4th पे था, so lot of interesting confusion. But anyway, so this was a lesson. Be prepared for any eventuality which you may have foreseen or you may not have foreseen. तो बड़ा जरूरी है आपको अपने ज़हन में रखना कि तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको प्रेजेंटेशन करनी है तो आप कहेंगे तैयार सूट पहन के आ गए और प्रेजेंटेशन हो जाएगी. You need to understand what are the key ingredients of the session that you're going into, whether it's an interview session or interviews में आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. And then after this thing we'll just go into the slide. How much time do we have? 1 hour. Okay, perfect. Then 1 घंटे पहले आप इंशाल्लाह बोर नहीं होना चाहिए, अगर होगे तो मुझे बता दीजिएगा. We'll stop. So interesting कि मैं आपको एक बार, so मैं एक इंटरव्यू में गया. This was OGDCL. So there was huge. तकरीबन एक बंदा इंटरव्यू देने आया, वो 13 बंदे इंटरव्यू लेने वाले बैठे. इस तरह पूरे टेबल पे बोर्ड रूम होता है, उस तरह का एंटर होता हूँ, मैंने कहा जी ये नाम है, मेरे बैठे. So then I could see who was the head of the interview committee. So I could see exactly across the table man with the beard आपसे मिलती जुलती शर्ट पहन के. So उन्होंने कहा जी बैठे, बड़े सीरियस, बहुत ही स्टर्न फेस. अरे आप ये सीवी किसने बनाया? मैंने बनाया. आपको सीवी नहीं बनाना किसी ने सिखाया? अब जस्ट इमेजिन यू रियली कीन टू क्वेश्चंस कौन से होंगे, क्या होंगे. सीवी नहीं बनाना आता. मैंने जी बस जितना बनाना आता था बना दिया. ऑब्वियसली यू कैन, अब मैं स्माइल कर रहा हूँ, मे बी एट दैट टाइम आई वाज स्माइलिंग. अब पता नहीं है यार, आप आ गए और ये इतनी सीनियर जॉब है और ये है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लेक्चर साथ दिया, कोई 30 सेकंड का. खैर नहीं, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू सम प्लेस फॉर इंटरव्यू, सम सीरियस थिंग, प्लीज बी सीरियस इन मेकिंग योर सीवी. देन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन वगैरह होते हैं, बट आई यू कैन सी आई वाज स्लाइटली टेकन अबैक बाय द रिएक्शन ऑफ द interview panel, and I was like यार ये तो गड़बड़ होगी कुछ. And I was already thinking मेरे सीवी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से he is saying what he is saying. खैर मैं जब इंटरव्यू खत्म हुआ, I said thank you, left, came back to सब मिनिस्ट्री भी होती है, मैं भूल गया. तो 2 घंटे बाद कॉल आती है, जी बात करना चाहते हैं MD तो करा दें बात. उन्होंने कहा जी आप ये बात करें, या अभी आपका इंटरव्यू था. मैंने कहा कहते हैं कि हम आपको ऑफर करें तो आप क्या करें? मैंने कहा जी आप ऑफर करें, आई सी कि क्या ऑफर है, देन आई कैन एडवाइज कि वेदर आई कैन और कैन नॉट. उन्होंने कहा अच्छा बस ठीक है, ऑफर आधे घंटे में आ जाएगी. वो बोलते इसी तरह थे, ऐसे बोलते. मैंने कहा बिफोर यू हैंग अप आई नीड टू आस्क यू क्वेश्चन. क्या? मैंने कहा आपने मुझे सीवी पे काफ़ी ज़्यादा लताड़ा था, सो या रगड़ा दिया था, व्हाटएवर, सॉरी फॉर द स्लैंग. तो इसकी क्या वजह थी? उन्होंने कहा जी कि इसकी वजह ये थी, आई वांट टू चेक योर कॉन्फिडेंस इन व्हाट यू हैव डन. Were you able to sustain the pressure that I was putting you under, or were you able to just crack down to sorry कि बड़ा गलत बन गया, इतना मैं ठीक कर लूँगा. तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते you held your ground. Obviously initially you were slightly shaken, but then you held your ground and you said. मैंने आंसर बाद मैंने उनको क्या की before we concluded that point. मैंने कहा जी मैंने तो अपनी तरफ से जो बना सकता था उससे बेहतर बनाया, but if there are areas of improvement please let me know. तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम यहाँ ही बैठे हुए सीवी बनवाने की हेल्प करें. तो मैंने कहा he said when you said that showed that you had confidence in it, but you also recognize that there is room for improvement. So another lesson that I learned that while you whatever you do, give it your best shot, but then have confidence in that. And secondly, and very very importantly, never ever think that what you've done is the best possible that could ever be done. There will always be, ये क्लीशे है, लोग कहते हैं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है, बट ट्रस्ट मी इंसान ना परफेक्ट नहीं है, तो हर किसी के ज़ात में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट के लिए. सो व्हेन यू आर गोइंग, ह्यूमिलिटी वुड रियली हेल्प. एनीवे, मूविंग ऑन टू दिस स्लाइड. मैं कैन मैं किसी कर सकते हैं आपको सबको करना होता है. आई डोंट माइंड, लेकिन मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहता. अच्छा वो कोई क्लिकर हो या कुछ. एनीवे, सो all of you are from management sciences, yeah, makes sense. Okay, so then it's good. So अगर आप देखें कि management जो field है, it has evolved a lot. So जब हम पढ़ रहे होते थे पीटर ड्रकर, अभी भी चलता होगा उसका नाम, पीटर ड्रकर, कॉटलर, and all those people were really the researchers that you talked about, and they have different theories which you
still relate to a lot of very good stuff, research बड़ी अच्छी हुई. McKinsey quarterly, McKinsey again it's a very big name in the consulting world and all. वो when they talk about कि how जो अब तक हुआ है, how would the management horizon evolve over the next say 50 years, what does it talk about? वो बात ये करते हैं कि अगर आप पुराने ज़माने में देखें, this is how the world used and there would be some places like this. क्या होता था कि आपका काम का क्या होता था? कि so in a manufacturing concern, जब people are operating machines, you would just managing the machine operators. Right? You'll have a supervisor or manager on the floor, they'll move around, see how people are doing, if there's any guidance that they need in terms of process and all those things they'll do them. But if you see, what now is, now with the automation, a lot of technology intervention, the things have changed and things are going to change further. Now, people look at things in terms of कि जी हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, तो अब आपने आपकी लोगों की जो मैनुअल से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हो रही हैं. So there has been a shift. Now what does it do? It puts pressure on the number of people that you need for the processes. It puts pressure on how people will behave. लेकिन अभी भी दुनिया में इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं कि there are companies, and I can tell you there's a company in Middle East which has somebody as a board member or director who doesn't exist as a human being, and that person is an algorithm. For a lot of decisions, people use algorithms to take decisions based on the facts, figures that they produce. There are people discussing, but the algorithms are the ones on giving you non-biased, objective, fact-based things. Next, please. Thank you. However, the question that will always remain is that people, a human being, will always be needed. Why? Because people who are managing people or working with people, they have qualities which machines, the algorithms, the technology cannot replace. And two things that you remember is when it comes to motivation, working with people and really getting up to speed and really getting them to be interested in what they're doing is very important, and that will human beings job for the rest of things. And secondly, if you want to change your business model, आप बहुत सारी बात करते हैं entrepreneurship, ecosystem, business models, business environment, how do you change, how do you adapt, how do you innovate, how do you become an entrepreneur. So people have to have these game-changing thoughts which will be done by people and not be machines will be doing them. So that's sort of a very important message that you remember, that if you are aiming to be a manager, then people manager, these are the qualities that will make you different from machines, make you a necessity in any organization that you go for. Before we move on, because I just received some guidance from you in terms of what are we expecting from this session. So I would obviously please feel free to ask me any question afterward, but I just had some ideas which I just jotted down, which was when you are looking at what you want to do in your lives, whatever you want to do ahead, first and foremost question that should come to your mind is ask yourself, who are you? Honest self-assessment. Remember one thing, मेरी बात ये मैं आपको तो मेरा अभी भी खैर मज़ीद इंशाल्लाह तजर्बे मिलेंगे, बट तो अगर आप मेरे से जिस्ट पूछेंगे ना कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है फॉर यू टू सक्सीड एज अ प्रोफेशनल इज टू नो योरसेल्फ वेरी वेल. A lot of times what we don't do is that we look at external environment and we say we are the best fit, हमारे से अच्छा कोई नहीं है, ये चीज़ हमें आती है वो, but we don't really focus too much into ourselves. सेल्फ कैथारसिस का हमें बहुत ज़्यादा शौक होता है क्योंकि अपने आप से बड़ा सच पूछता है और सच सुनने का दिल नहीं करता. Unless you know who you are, आपकी सेल्फ असेसमेंट अच्छी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा मैं क्या हूँ, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कौन से वो एरियाज है विच आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज. यहाँ से लोग होंगे जिनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी हो, जो प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप में करते हैं क्लास में, उसमें वो एक बंदा होगा जिसके इनहेरेंटली एबिलिटी है टू लीड पीपल. कुछ लोग होंगे जो सबड्यूड होंगे पर बहुत तेज होंगे, दे आर वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ नोइंग व्हाट दे हैव टू से, बट सेइंग इट इज नॉट देयर फोर्टे. Right, so these are different styles. There are some people
5 के आपके ग्रुप बनाए, जिसे प्रेजेंट करना, आप कहते हैं एक लीडर बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली आप समझते हैं यार ये लीड करेगा। एक बंदा जो सारा सारा काम करता रहेगा, तीसरा बंदा होगा जो कभी लड़ाइयाँ होगी आपस में या कोई होगी वो रिजॉल्व करेगा। These are very distinct characteristics and attributes of personality. बट ये आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या हैं, और उससे अगर आपको पता चलना है कि what is good about myself and what are the things that I need to improve. For example, if I am that number cruncher, laptop guy, presentation बनाने वाला, तो मैंने देखना क्या, मैंने इससे सीखना क्या जो लीड कर रहा है, because he or she is a leader in our setup. इसी तरह मैंने इससे क्या सीखना, जब कोई लड़ाई होती है, this is the guy who really enables collaboration. वो सबको इकट्ठा लेके चलने में बड़ा अच्छा है, वो एक दूसरे को लड़ाई झड़ाई होती है वो कैसे एक दूसरे को क्लोज लाता है। सो ये वो सारी चीज़ें जो आपको ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट से आएगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है दुनिया में इस वक्त, और वो ये है कि क्या आपको फोकस उन चीज़ों पे करना चाहिए जो कि आपकी सो कॉल्ड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है या वीकनेसेस है, या उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ्स है एंड एम्पलीफाई। तो दिस इज एन ऑनगोइंग डिबेट। आई थिंक बोथ यू शुड नो। पहली बात, अगर पता चल गया ना आपको, मुझे पता चल गया कि यार मैं I will not be somebody who is a great talker, so then I have to say कि यार मैंने अपनी ability to speak publicly have to improve। पर साथ ही मुझे अगर ये पता कि यार मेरे अंदर ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि I can decipher a lot of information very quickly, so इसका मतलब है मैं उस जगह पे बड़ा अच्छा काम करता हूँ। I need to work further on that because that's my strength. So for me it is a combination of both. Know which areas you actually are lacking in and make sure that you work on that, not because somebody is forcing you to, because you want to be better. And we agreed, I think, that we all of us have some areas to really improve upon. So that is one important lesson that we need. And last but not least on this particular topic, do not pretend. ये हम लोग की बहुत ज़्यादा, और कि मैं I can tell you, I work with a lot of senior executives, I still see this thing कि लोग कहते हैं pretend करो, शॉर्ट टॉक है 5-10 मिनट की, आधे घंटे की मीटिंग है, उसमें प्रिटेंड कर देंगे आपको ये भी आता है, ये भी आता है, इसका भी पता ही हो। दैट कैन वर्क टेम्पररीली, बट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म यू विल गेट एक्सपोज्ड। इफ यू डोंट नो समथिंग देयर इज नो हार्म इन सेइंग कि यार मुझे नहीं पता, कैन यू प्लीज टेल मी। अब अगर आप कहेंगे हाँ मुझे पता, मे बी द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट इज अबाउट द थिंग दैट यू डिड नॉट नो बट यू प्रिटेंडेड टू बी नोइंग दैट, एंड दैट इज वेयर यू डोंट वांट टू डू दैट। सो यू हैव टू very sure, don't pretend you don't know it, that's कोई shame नहीं है, maybe learn it later, but whatever you are you have to come across as a genuine honest person in terms of interacting with people. Socrates का बहुत लोग नाम सुना, सुकरात आप लोगों ने almost जिसने भी पढ़ा हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा सिखाया जाता था, अभी भी you know what, this is a very amazing quote that I am using from him. वो देखा, I am the wisest man alive, but I know one thing, and that is that I know nothing. If you understand really the essence of this is, in the moment you think यार मुझे बहुत कुछ नहीं आता, then you know everything is there to be learned, and that really makes you very different from most people who say कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा शरारते हैं, हमारे से किसी को नहीं आता, कि हम ही सबसे ज़्यादा। और वो होता कि इस क्लास में, we just consider this a classroom of 50 class fellows, there might be somebody who has the highest GPA. Okay, यार मेरे से तो अच्छा ही कोई नहीं यार, प्रेजेंटेशन में फर्स्ट नंबर, हर सब्जेक्ट में GPA 4.0, ये वो सब कुछ है। Remember, this is a very small subset of a very big outside world, जिसमें आप जब जाएंगे तो आप जैसे हजारों लाखों होंगे जो यही सब समझते होंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। So the more you become humble about your knowledge, the more there is a room for you to learn more, and that humility will also take you to places which a lot of people will not be able to do because of the approach that they take in life. सेकेंडली जो अक्सर क्या होता है कि जब भी आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, तो घर में भी आपका होता है, तो क्या होता है कि आपके घर की डायनामिक्स होती है कि वालिद साहब जो से हैं, he is the principal decision maker, but वालदा is one who can really help you get a lot of things that you want to do. This is how the real world also works. You need to know who are the stakeholders in your life, whether it's your job life, whether it is your promotions, so you don't need to know who are your stakeholders, who are the people who are somehow relevant to your life. Then you also understand कि उनके साथ उनको how do I influence them. So for example, मैं क्लास में आता हूँ, people are very apprehensive. The first time I go into a class, I see a very different body language. लोग anticipate कर रहे हैं कैसा बंदा है, क्या बातें करेगा, क्या इसको कैसे चक्कर देना है,
क्लास में बातें करनी कैसे करनी, चीटिंग करनी कैसे करनी, लॉट ऑफ थिंग्स कम टू माइंड. सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप अनफ्रीज कैसे होते हैं, आप दो एनवायरनमेंट्स आप दोनों के आपस में रैपो डेवलप कैसे होती है, और उसमें क्या होता है, देन वंस यू नो ईच अदर वेल देन यू नो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल. एंड इन्फ्लुएंसिंग डजंट मीन दैट यू हैव टू डू समथिंग रॉन्ग. Influencing is that if you have to get something done, how would receptive would the other party be to what you're trying to tell them? So that's why how you approach people, and there's no one size fits all or one approach that works everywhere. You have to remember that there will be different people that you talk to, there will be different individuals that you talk to, and that is how you understand isko message मैंने कैसे पहुंचाना है. Secondly, non-engagement is not an option. Especially for business graduates, people who are getting management degrees, if you are shy, that's fine, but you remember that you have to interact with people. You're not talking to machines, you're not talking to walls. So if you have this apprehension, it's just like fear. Unless you face fear, unless you tackle fear, you'll always have fear from that thing. Public speaking में बड़ा fear होता है. मुझे अभी तक याद है कि my FSC, बल्कि उस एज में आप लोग भी गुजरे रिसेंटली, और ये मैं मेरी खाला आती थी घर में, तो मेरी वादा कहती थी कि मुझे लगता है कि बेटे को इश्क हो गया. तो क्या हुआ कि बिल्कुल चुप होके बैठ गए. तो इस चुप होके बैठना इज समथिंग दैट इज रियली has some fishy thoughts, and that was me. I was shy in terms of public speaking, especially meeting new people, not knowing मेरे strangers होते थे, क्या करें. And I was told by somebody, and I should be grateful to that person. और वो ये था कि you will always be like that unless you start doing it. You start talking to people, and especially now that the field that I'm in, I have to talk to new people almost every day. So if you don't develop this, you don't engage with them, you don't talk to people. If you're meeting somebody, आप इंतजार करते हैं मुझे आके खुद ही मिलेगा. Maybe that is one thing that can happen, but there's also another thing that you will go and say hi to somebody and say कि हाँ जी ये मेरा नाम है, ये मैं करता हूँ, and that's how conversation starts. Maybe the other person is thinking the same way कि यार मैं क्यों पहले जाऊँ आपके लिए. So you have to keep engaged. Second, listening. So there are 4 skills in communication जो आपने पढ़ी होंगी, or reading, listening, writing, or speaking. Nothing is more or less important than another. All are important. कई दफ़ा होता है हम कहते हैं बोलते बहुत चले कि दूसरा बंदा बोलता है आप सुनने को तैयार नहीं होते. आजकल बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती हैं मोबाइल्स की. So while you might have experienced the same in your classes and all, कि आप लोग स्कूल्स भी करते होंगे, टीचर्स भी करते हो शायद. But I can tell you this is the same in the corporate world. When we're in the meetings, a lot of times when you're talking, that some people just get distracted because there's a WhatsApp message or some call coming and people start meeting. Listening is becoming more and more of a challenge, but its importance has not lessened at all. So जब आप बात करते हैं, you expect people to listen to you. The same thing, people expect you to listen to them. And also not only because of that, but also because unless you listen, you would not know the perspective that the person is coming up with, or what ideas he or she has. Maybe that adds to your knowledge base, maybe your decision making gets improved because you're a good listener. So listening is extremely important. And again, I'm saying communicate, and then communicate more. By staying quiet, keeping your perspective, keeping your opinions to yourself, आप किसी को सर्विस नहीं कर रहे. You're just doing disservice to yourself and the people, because maybe you have a lot of things to say, to contribute to add value to, but you are not saying. So you have to communicate. Not an option again. You have to communicate. चाहे वो आप emails के जरिए कर रहे हैं, चाहे आप मिलके कर रहे हैं, physically one-on-one meeting में कर रहे हैं, चाहे आप जिस तरह भी कर रहे हैं. But that is a very important thing. Across all organizations, people now realize that communication is extremely important. वरना डाइल्यूट रहता है मैसेज. आप करना कुछ चाहते हैं एज ए CEO ऑफ ए कंपनी, आप कुछ करना चाहते हैं, बट अगर आपको मैसेज तक नहीं पहुंचा जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है, हाउ वुड यू अचीव व्हाट यू वांटेड टू अचीव? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन एज यू सेड, यू हैव टू नेटवर्क. तो ये जनरल बातें थी व्हिच आई जस्ट वांटेड टू शेयर. नाउ देन अनदर एडवाइस अगेन फॉर व्यूअर्स के बीइंग स्टूडेंट्स, बीइंग ऑलमोस्ट गोइंग टू बी ग्रेजुएट्स, आपके लिए हाउ डू यू सी कि करियर मैनेजमेंट कैसे वर्क करती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज आई सेड, बी बोल्ड. बी बोल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि फैशन के हिसाब से बोल्ड हो जाए या आप हर जगह बोलना शुरू करते हैं और ऊंचा बोलना शुरू करते हैं. दैट्स नॉट रियली बोल्डनेस. बी बोल्ड से मतलब है कि वी हैव कॉन्फिडेंस. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द इंटरव्यू आई वेंट टू. इफ यू डिड नॉट हैव एनीथिंग टू से टू डिफेंड योर ओन CV, then do you really expect people to know कि नहीं यार he has confidence, हो सकता किसी से बनवाया हो. So whatever you believe in, you have to be bold to admit, yes, this is what I believe in. You may or may not be right,
But you will never know unless you are bold enough to admit that. And that is how you can describe it. You can be captured, or you are actually in a state where you're not coming out. The other is that you actually have the world to fly around. So this is, I would say, this is very, and then be confident. Confidence should come from what you know, what you've done, what you've experienced, what you've learned from others. But that should all add to your confidence for you to execute anything, any decision, any task, anything. So that's very important. On a lighter side, be confident enough. So when you look at yourself, you feel good about yourself. You're fine. Yeah, if I'm confident, look, this is what I come across. This is how people see me. Okay, this is somebody that we have to take seriously. Maybe otherwise they won't take you seriously. What do you see? Frog. How many people see a frog here? There's no chime saying frog nazar aa raha hai. Agar aa raha to aa raha hai. So only one person has. Baki sabko kya nazar aa raha hai? Kuch bhi nahi aa raha. So a lot of people. How many for a frog? पानी तले जो हम कह रहे हैं एनिमल अगर नजर आ रहा है, क्या फ्रॉग कितने लोगों को नजर आ रहा है और कितने लोगों को फ्रॉग नहीं नजर आ रहा? आपको क्या नजर आ रहा है? Horse. So you just have to look at it differently, and that is extremely critical. Always have perspectives in life. If you see the same thing in one way, maybe the another person is seeing it differently. And unless you have your own perspective, but you also appreciate other perspectives, then you really have a holistic view on things. And that is very critical. अब आपको पता है एक CEO की क्या जॉब होती है? मिसाल के तौर पे, उसको तो कोई काम ही नहीं है. ना उसे फाइनेंस करनी है, वो CFO ने करनी है, मार्केटिंग CMO ने करनी है, टेक्नोलॉजी CTO ने करनी है, HR CHRO ने करनी है. तो CEO की तो जॉब बड़ी आसान है. But why is he paid the most? Or why does he have the? Because his job is look at all the perspectives and then decide what's the course of the organization. So for us, the lesson here is that have perspective and appreciate other perspectives. There is not going to be one way to look at everything. There would be multiple ways. Human beings are different, they are programmed differently, they evolve differently. And that is why they will have the perspectives which could be different to yours. So have perspectives. At the end of the day, एक बात याद रखिए, मैं आपको शुरू में एक बात की थी, my belief, again, I'm not saying that you have to agree to what I'm saying, but my belief has always been कि mediocrity has never been something that I feel good about. मैं कहता हूँ कुछ भी करें, you should have this thing, I'm investing my time in this. अब पढ़ाई करें, maybe सुबह निकलते हैं जल्दी घर से, यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारते हैं, you spend time with your fellow students, teachers and all. This is investment in your life. You actually, after time guzara, that is part of your life. How can you not value it enough? So for me, whatever you do, आप sports खेलते हैं, try to be very good at it. आप पढ़ाई करते हैं, be very good at it. आप drama करते हैं, whatever you do, be good at it. And for that, you need what we call passion. आपको ये होना चाहिए कि यार अगर यहाँ से पूछे क्लास में से, how many of you want to become the CEOs of the company, and say 50% of people want to be, or 100% of people want to be the heads of an organization, but that can't be. So people who do get there, you will find some qualities which are related to them. Their passion, they had the passion to be where they are. And this is for any organization. It could be researchers. People जो professors होते हैं, तो general impact factor को देखते हैं कि यार हमारा general impact factor बढ़ा होना चाहिए, because this is a good thing कि अच्छे high repute के journals में आप दिख रहे हैं और publication हो रही है. So it could be very different things. But whatever you're trying to do, whatever you're trying to invest your time and effort in, you try to be good at it. And that will only deliver by the passion, the energy that you have for that. And that will take you there. And that's why when I have an example, I just felt during my last year of engineering, yeah, if I do this engineering for the rest of my life as a profession, I may not be able to excel at it. And then I decided, fine, it seemed very difficult कि यार सारे engineering की job करेंगे, मैं कुछ और पढ़ना शुरू कर दूँगा. But I just realized no, I have to do this for the rest of my life. I can't be just कि job मिल जाएगी चुप करके आर्मी ने salary मिलेगी. So I said,
And so when I did my MBA, I just realized in the first class, yeah, this is something I want to do. And then I said, and I did it well. So I could always say my effort in my MBA was much more than my effort in engineering. However, the dividends that I got out of it are also much more. So when you put passion, when you do what you love to do, and what you love what you do, that is the key. आपको समझ आ जाएगा कि यार अच्छा मैं दोनों पढ़े थे बड़ा लाइक है मेरे से, but I'm doing better at something because you really are into it much more than that person who's just doing it for the sake of it. कि यार क्या करें अभी करना ही पड़ेगा. So when you go into the corporate world, you will realize there's a lot of people, smart people. ये जब हम नर्स में इंजीनियरिंग में गए तो हमारे साथ के लोग almost everybody was a topper of a board. पहले तो ये सवाल होता कि यार किधर फंस गए सारे इतने आ गए. But then you start to realize that some of them were born engineers क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग करनी थी. MBA में गए कई लोगों ने कहा यार इसलिए कह रहे हैं कि ये MBA हो जाएगा तो शादी अच्छी जगह होती है, ये जॉब मिल जाएगी उससे हो जाएगा. And I just said okay that's fine but that would not be good enough for the rest of your lives. And people did what they did. So I would, after this will be the last slide and then I just want to interact with you and just throw as many difficult questions at me. But there's a parting thought that I wanted to have with you. तो वो क्या है? इसका नाम आपने सुना है? आपने LinkedIn का सबने नाम सुना होगा अक्सर लोगों प्रोफाइल नाम जब भाई ना विवेक CEO of LinkedIn उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. So I wanted to conclude my at least one-way communication on this. वो क्या कहता है? So किसी ने पूछा what is the secret of your success? तो मैं कहता 2 words, right decisions. But how do you make the right decision? So they go 1 word, experience. And how do you get the experience? 2 words, wrong decisions. So a lot of you are sitting here looking at your career. If somebody thinks, yeah, मैंने maybe degree तो कर ली है, but I should be doing something else. You learn from your experience. और experience क्या था? गलत फैसला कर लिया, कोई गलती कर ली. Indecision is the worst thing for me. And making a wrong decision is a better thing for me because I would learn from that decision and maybe do something else. So just see if these guys who have done well in their lives, professionally they are considered to be success cases, they would also say the same things. कहते हैं हम गलतियाँ करते हैं and then we learn from your mistakes. What we don't want to do is to repeat the same mistakes. So experience, whether it's your student life experience, whether it's your experience of talking to each other, knowing each other, that should make you somebody who is at a higher echelon than you were yesterday. And if you move like this, the same fundamental principles, the same recipes will hold your ground for the rest of your life. So that was sort of my few thoughts that I just wanted to share. जब आप market में जाएंगे, there will be a lot of things that you'll come across. But if you just remember the fundamentals, be confident, be bold about what you know, be humble. It's always going to be learning experience. Never think that you've learned everything. There will be people who know more than you. So that those sort of things, if you really make it part of your approach to life, trust me, there's no stopping. So that was my sort of 2 cents to you. Thank you. Want tough questions? एक क्लास में मैं कहता हूँ कभी मत कीजिए. सर आपने बैकअप प्लान की बात की, आपके पास हो डेटा आपके पास होना था, आपने प्रिंट फॉर्म में कराया. सर एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच. सर अब प्रोएक्टिव अप्रोच में और बैकअप प्लान में हम किसको ज़्यादा प्रेफर करें? एक प्रोएक्टिव अप्रोच को प्रेफर करेंगे, बैकअप प्लान को प्रेफर करें? एज अ स्टूडेंट में किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें? नो इंटरेस्टिंग बात नहीं. मेरा थोड़ा सा व्यू बैकअप प्लान के बारे में जो मैंने आपको बताया. बैकअप प्लान और ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें नहीं है फॉर मी. वाई एग्जाम्पल ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है? Proactive approach is that you want to do something, either you wait for that thing to hit you, or you proactively, in advance, tackle it. Now, backup plan क्या है? कि जो आप करने जा रहे हैं, if it doesn't work, do you have plan B? So for me, they are not mutually exclusive. Both are important characteristics. However, what I not want you to do is, कि you look at backup plan because you believe the plan A will not work. You believe in the plan that you're doing is the best possible plan that you have.
And backup plan is only कि अगर criticality of situation ऐसी है कि you cannot afford it going wrong, then you say कि अगर जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी कि लैपटॉप नहीं लेके जाने दिए तो आपके पास कुछ है, क्योंकि वहाँ अगर लैपटॉप पर कुछ भी ना होता बैकअप तो क्या करते, शक्ल देख के किसी को तो समझाना जरा मुश्किल था टेलीकॉम. So that is what I'm saying. So that doesn't mean that you cannot be proactive. So for example, in that example that I gave you, my proactivity was I said कि यार अच्छा क्या करना चाहिए. The best thing is कि आप पहले prepare कर लें. So panic होता है when you're working with high level stakeholders. A lot of things don't come कि एक महीने बाद ये होगा, अचानक होगा, आज 3 बजे ये होना है, so आप इसके लिए ये कर लें. That might require 2 days of work. So if you already prepared for that, that's very good for you. A backup plan is if something goes wrong, what am I going to fall back? So I don't think that those are mutually exclusive. So I think having both, but remember backup plan को ध्यान में ये ना रखिएगा कि backup plan इसलिए बनाना कि you don't have confidence in your original plan. That's the wrong way of thinking. You believe what you've done in terms of planning is the best possible course. And backup plan is only if things, इसको legal language कहते हैं force majeure, वो आपके out of control है, वो होगी तो क्या होगा? Otherwise you have done the best for possible circumstances. Make sense? सर आपने सर मैं तो एक स्टूडेंट हूँ सर, बचपन से यही सोचा हूँ कि कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट. आपने टर्म यूज़ किया एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट. ये आप क्या है वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट के बीच? So मैं आपको एक बात दूँ. So 360 degree feedback सुना आपने कभी? I have been through a lot of exercises in which we went through the 360 degree feedback. तो मुझे 360 degree feedback में just to explain for people who don't know. So if I'm working in an organization, I have somebody that I report to. I have people who are my peers at the same level, people who are reporting into me, right? And maybe my friends and all you can consider peers. Then they get feedback from those people who and based on that feedback they come up with your overall personality profiling and then they make some recommendations. So for me, when I went through, so there's similar sort of feedback. I tried to improve upon that. वो ये थी कि यार generally you, because you are a friendly person, you to interact with people by giving them a lot of respect and all of, you're very amiable and all those things. Therefore people take you for granted. ठीक है? So मेरे क्या so my development plan that is advised me to do was कि आप friendly हैं, that's a good thing to have. But इसके साथ combination कर लें, be firm. So when you are firm and friendly, that will achieve your objective. इसी तरह जो confident और मैं किस example देता हूँ. ऐसे confident होने का क्या मतलब है? You know what you say. Over confident क्या मतलब है कि you think that you know more than what you really know. ठीक है? So अगर आप humility के aspect आप confidence के साथ attach कर दें, that's it. अगर आप कहते हैं कि मुझे वैसे तो मैं यहाँ तक ही भाग सकता हूँ और मैं कह रहा हूँ मैराथन भाग लूँगा, that is over confidence. Confidence is कि I can run fast till that point. ये फर्क है. और वही आप कई दफा शो करते हैं. जब वो शो करते हैं, as I told you, sooner or later you will get exposed. Because if you're doing something which is more than what you actually have in terms of capability, you will be exposed. क्योंकि एक्सटेंट लोग एक्सपेक्ट भी यही करेंगे, फिर आप वो डिलीवर करेंगे जो आप कह रहे हैं. सर जो आपने पिक्चर दिखाई है ये फ्रॉग और वो हाउस की, तो उसमें दो अलग डिफरेंट किस्म के सिनेरियो, कोई उसे फ्रॉग समझ रहा था तो कोई उसे हाउस. तो सर जी सर वो दो डिफरेंट किस्म के सिनेरियो थे ना, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दोनों गलत तो नहीं हो सकते ना, वो फ्रॉग वाला या उसमें क्या इसके बारे में क्या? ये एग्जैक्टली देखिए, आप तो खुद ही कहते हैं, एक आप हैं, एक मैं नेट से और 4-5 और लोग, और हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. मैं कहता हूँ जैज इज द नंबर 1 कंपनी इन दिस मार्केट, बट जोंग इज वेरी एग्रेसिव. ठीक है? एंड देयरफॉर वी थिंक, आई थिंक जोंग इज the number 1 competition. मैं as a theoretical आपको hypothetical example देता हूँ. You say नहीं, मेरे ख्याल में Telenor is a bigger threat. Third guy comes and say नहीं, you've won as a lot of financial backing from the UAE guys, therefore that is a bigger threat. Now we all are talking about and we have logics. Somebody will say that Zong is taking a very serious position in the LTE 4G market versus another person saying financial backing किसी की बड़ी strong है. तीसरा कह रहा है नहीं, they have a very strong group at their back and that those
policies, procedures, and their experiences of 14 market will hold them strong. 3 different people, 3 different perspectives. My job is, if I am the one who has to take a decision, is to say, okay, all 3 are people with knowledge. They have different perspectives and they have logics against each perspective. So I get all those perspectives, see them on merit, and then say, okay, although these have merits and demerits, but this is the perspective that we go for. And then we have a debate and we move on to that. So perspective होना बिल्कुल कोई इसमें हर्ज नहीं है. What we need to do is that we don't get possessed by the perspectives that we have. We have to allow others' perspectives for consideration, and then we, based on the meritorious approach, which is कि अगर इसके pros and cons, इसके pros and cons है, which perspective makes the most sense for the organization, right? So that is ideal. Having perspective is even more important. अगर सब कहें कि नहीं सबको एक घोड़ा ही नजर आएगा, तो फिर आपके पास इतनी wider audience का decision making की जो input आनी है वो नहीं आएगी. So have perspectives. That's very important. Evaluate perspective, and then based on the appreciation of perspectives, then decide. Please. सर आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस has changed its meaning over time. अब लेटेस्ट बता दूँ. So मेरी लेटेस्ट सक्सेस है कि am I internally satisfied with it? आपके लिए सक्सेस ये है कि मैं जो काम मैं कर रहा हूँ मैं उससे satisfied. So whatever I do, and you do a lot of things every day, right? At the end of the day, I ask myself, do I feel satisfied about it, or do I feel कि यार मैंने कर तो दिया, तनख्वाह तो इतने 1000 लाख बढ़ गई है, doesn't make me feel satisfied. So for me now, success is used to be vertical growth. It used to be कि यार मैं कितनी जल्दी promotion मिलेंगी, कितनी जल्दी मैं grow करूँगा, कितनी जल्दी तनख्वाह बढ़ेगी. And I told you 5 साल से start किया, and I'm somewhere else now. But वो मुझे satisfy. मुझे हर दफा ये question होता है कि हमारे जो job salary मिलती है, that is one day before the last date of the month. से 31 का महीना 30 को मिलती है. I just realize कि 30 को जब मिलती है, उस दिन 15-20 मिनट के लिए खुशी होती है. और उसके बाद अगले दिन आप भूल जाते हैं, अगले दिन रात का इंतजार करते रहते हैं. So that is not my source of success. But my, for example, satisfaction, success too, and if I'm talking to you and I go back and say maybe there was 0.001% of knowledge sharing that I was able to do, that is satisfaction over me, and that is my criteria of my personal success. But as I said, it has evolved. It started with growth. मैंने CSS करना था ज़िंदगी में. Class 3 से मैंने पहली दफ़ा ऐसे लिखना शुरू किया. My aim in life, I wanted to be a civil service officer. Till my engineering, that was my constant thing. Before graduating, bachelor's चाहिए होता है. I asked my father कि मैं अब exam दे दूँ. उसके बाद उन्होंने कहा बेटा, what do you want to do? Do you want to have money, or do you want to have power in terms of the government? I said, आपने ज़िंदगी में बहुत कर ली है, वो वाली चीज़ पैसा नहीं कमाया आपने, क्योंकि I want to earn some money. उन्होंने कहा फिर हालात तरीके से इसमें तो मुश्किल है सरकारी जॉब में, then don't go for CSS. And that was my success criteria at that time. How quickly can I earn money? Then I joined my profession. What success was कि मैं कितनी जल्दी promotion करता हूँ. 1.5 साल मुझे एक promotion मिलती है. That was my success definition. Then I moved to government to private. और फिर मेरी success क्या था? मुझे किसी ने, मैं ministry में काम करता था, somebody just came and said कि अब आप सारी उम्र यही रहेंगे. I was in my 20s. मैंने कहा क्यों? मैंने कहा because आप जितना टाइम यहाँ गुजारेंगे, you're becoming less and less valuable from the private sector. That became a challenge. My success was, can I make a transition to the private sector? Yes, I did. फिर क्या था? What's next? Grow करना है private sector में. Salary कितनी तेजी से बढ़ेगी? एक bonus कितने मिलेंगे? मैंने कितने मुल्क देखने हैं? Business class में सफर करना है. Economy की जगह. So these became my success factors. मेरे ये indicators होंगे. But today, as you asked me, I told you, it's a different indicator altogether. For me, it's much more important than spend time with people. The reason I teach, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मेरी salary from my teaching was more than my salary from my job, right? Now, I don't know what I'm going to get as a check from the university, because that doesn't give me satisfaction. What does give me satisfaction is to see youngsters growing in their lives. That's, I'm just saying, that's changing. सर जैसे लिंक्डइन पर उन्होंने अपने सक्सेस सीक्रेट के अकॉर्डिंग तो अवार्ड्स कहे, आप क्या कहेंगे? For me, honestly, I never thought about this question, so thank you for the question. For me, मेरे लिए बड़ा important question. Have your principles and values. So stick to that. One. Secondly, be humble. Just because you are in a place जहाँ आप सबसे ज़्यादा आपको इज्जत मिल रही है, doesn't mean that you
are superior to anybody. एग्जाम्पल तो एक सेक्रेटरी एक्ट होते थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, वेरी सीनियर ऑफिसर, हम मैरिज के साथ साथ ट्रेडिंग में होते थे। हमने ब्लॉक का 4th फ्लोर से, तो हमने कहा नीचे देख रहे हो, नीचे तो देखो बहुत लोग आ जा रहे हैं, कहते नहीं वो दरवाजा गेट के साथ जो बंदा खड़ा हुआ है, मैं बोले दाने बेच रहे, कहते हाँ। उन्होंने कहा इसमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये कि उसके लिए ज़िंदगी में ये रोल है दाने बेच, उससे कमाता है, खाता है, फैमिली को खिलाता है। हमें इसको का डिसीजन हम ले रहे हैं $300 मिलियन के, $400 मिलियन के, हमारा ये रोल है, पर मसला है कि हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी ज़्यादा, उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। बट एज ह्यूमन बींग्स वी आर, दैट इज अगेन आई थिंक ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू जस्ट रिमेंबर कि यार ठीक है, यू बीन गिवन अ रोल, यू ट्राई टू डू दैट रोल टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। सो दीज आर 2 थिंग्स इफ यू रियली आस्क मी, फॉर मी दीज आर सक्सेसेस। और आपके जो आसपास लोग हैं, इफ यू आर आउट टू एट माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, if they feel good about myself, my things to them, whatever I'm saying to them, whatever I'm doing for them, I don't have any regrets by the way. ये मैंने कोई ऐसा बड़े ऐसी चीज़ें हुई जो कहेंगे नाकामी थी, I think they were very good learning lessons. जी, यहाँ से कुछ सब जी। सर आपके हिसाब से एक अच्छा लर्नर कौन होता है? लर्नर वो होता है जो अपनी गलती से सीखता है या दूसरों की गलतियों को देख के सीखता है? अंग्रेजी में एक कहावत है जिसमें बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, there are 2 ways to learn in life. One is to learn from other people's mistakes, and one is to learn from your own mistakes. But learning from your own mistakes costs very high. So मेरे ख्याल में अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखने से अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप करके सीखना चाहते हैं, it will have a price attached to it. सीख कर तब भी जाएंगे. So both ways are learning, but मेरे ख्याल में वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है जो आप खुद गलती करके सीखते हैं. सर अगर दूसरों से सीख के अगर हमें लगे कि वो बंदा पहले फेल हो चुका है, तो हम वही चुप तो अपनाएंगे तो नहीं, क्योंकि हम लर्न करना चाह रहे हैं और अपने कॉस्ट करेंगे। That is learning ना. अगर आपको पता है जो उसने किया वो गलत किया, उससे वो नाकामी होती है, maybe you don't want to do that. That's learning. Isn't it learning कि आप कहेंगे यार ये इन्होंने जो काम किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि this may lead to failure. That's learning. You don't have to repeat that thing, fail and then say ये मैंने सीखा. ये तो फिर learning from your own mistakes होगी ना. सर ये जरूरी है? Sorry, just before that. आप किस किसी ने? जब आप अपना MBA कर रहे थे तो आपके most of your bandmates were doing job and you were still seeking for a job. So how to cope up with that feeling कि आप lag behind कर रहे हैं, because हर किसी का patience level और determination level आपके जैसा तो नहीं होता. देखिए मैं हमेशा बचपन से ऐसा नहीं था. So first of all I think जब मैं देख रहा था तो शुरू में मुश्किल था. I will be very honest, मुझे लगता था यार ये लोग कमा रहे हैं, पता नहीं ये जल्दी गाड़ी खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, इस तरह का शौक होता है, गाड़ी ले लेंगे जल्दी गाड़ी. But just realize one thing. और अच्छी समझ आ गई. मैंने कहा I'm what I was say 22 doing my MBA, then start किया था. मैंने कहा क्या होगा, 24-25 में चले जाएंगे. तो मैं ये 24-25 जहाँ पहुँचेंगे मेरे लिए एक तरह होगा ये कि उनको हेड स्टार्ट मिल चुका होगा, वहाँ पर पहुँच चुका होगा, मैं यहाँ हूँगा. But because I'm doing something that I really have passion for, I will be able to cross that. और मैं आपको आज बता रहा हूँ, my class fellows, a lot of engineering class fellows, हम सारे बड़े दोस्त हैं. 80 or 90% of my engineering class fellows are in North America and UK. तो हम अक्सर मिलते हैं, कभी किसी मुल्क में मिलते हैं, कभी कहीं मिलते हैं या पाकिस्तान में मिलते हैं, तो हम यही बात करते हैं. वो कहते हैं तुम बड़े अच्छे रहेंगे और हमने नहीं इंजीनियरिंग करते रहे. कई इंजीनियर कहते हैं हमने अच्छा की ये किया. And I feel inside, I honestly don't think that I have somebody in front of me कि मैं को यार इसको मैं चेस करना चाहूँ. If they've done very well, they're working for the top companies. एक मेरा दोस्त है who's the head of nuclear for General Electric, which is a very big company, very big portfolio, and their people work for Qualcomm, NASA and all. However, I don't feel that I've lagged in terms of money, in terms of vertical growth, in terms of my personal friends at work, in terms of my family. I've spent time with them in Pakistan. So a lot of these things are putting me up there. Some things are putting them up there. But there's absolutely no. उसको था शुरू में ना कि ये क्या होगा. But I just had this feeling, my passion. I was just loving what I was doing. मैं कहता यार ये finance पढ़ता हूँ, marketing पढ़ता हूँ. I'm just bringing me closer to the real world. Engineering में टैंक पे काम करा रहा था तो मैं सबसे एंड में खड़ा था. तो पता नहीं क्या टैंक में मैंने क्या करना टैंक के साथ. So I wasn't passionate about it. And that's what I realized, and I think never ever felt that I was lacking there. आप कुछ कहें? आपने हाथ नहीं खड़ा किया? Any जी? For what will you go? A job with good payment or a job with satisfying job with low payment? Always generator. Always something which satisfies me doesn't. मैं आपको honestly बता रहा हूँ, मैंने 11,000 पे नौकरी स्टार्ट की ना. उस वक्त जो मेरा दोस्त था जो कि मैं उस दिन हादसा था उससे, उसकी 17,000 थी. 6,000 रुपया लगता था
बहुत ज़्यादा 2000 में, आज से 18 साल पहले अभी तो आपको लगता होगा मजाक है, उस वक्त बहुत पैसे लगते थे, तो 6000 का फ़र्क है। तो आई वॉज 2/3 ऑफ दिस सैलरी लेवल। मैं कहता यार तुम लोग बड़े अच्छे रहे कि मैंने 2 डिग्रियाँ भी कर ली तब भी तुम्हारे बराबर नहीं। अब यू शुड नो बट मे बी आई एम गेटिंग डबल सैलरी। ऑनेस्टली स्पीकिंग शुरू में आप इस मामले में बिल्कुल, मुझे किसी ने, मेरा स्टूडेंट है उसको खाड़ी में जॉब मिली है, उसको HBL में जॉब मिली है, उसको एक और कौन सी SNP या किस में है, ठीक है। तो he just came to me and said कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा what do you want to do? कहता मैं पैसा बनाना चाहता हूँ। कहता पैसा काम लेना, उसने कहा यहाँ मिले। मैंने कहा you have to ask my advice। he said मैं क्या करूँ। मैंने कहा if you I were you, मैं सैलरी को बाद में बिल्कुल देखूँगा, पहले मैं सोचूंगा मैंने करना क्या। मैंने सीखना भी, मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ सीखा नहीं, मैंने सिर्फ स्कूल से बाहर आया हूँ, तो मैं क्या करना था। सेकेंडली जिस कंपनी में काम करूँ कंपनी किस तरफ जा रही है, क्या वो ग्रोथ कंपनी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बंद होने वाली है, पैसे बहुत ज़्यादा दे रही है। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, ऐसे नो योरसेल्फ इफ मनी इज योर ड्राइविंग फैक्टर, maybe that. For me, answer will be where I can learn very fast, where I see the company might be very small but there is a lot of potential to grow. The industry that I am going to work for is a very fast-paced industry and you can really grow if you learn well. So for me, satisfaction or clearly the reason. Students हमसे अक्सर एक क्वेश्चन करते हैं कि what is scope? What is? What is scope? हम उनको मल्टीपल उनको आंसर्स मिलते हैं, मार्केट से भी मिलते हैं, वो खुद भी सर्च करते हैं। My question is कि क्या ये कस्टमाइज्ड टर्म है और it's a generic term for everyone? Scope of what? Scope for any specific subject, scope for any specific. अच्छा, so what is the I Regarding call it corporate market for this particular thing. जी। Scope क्या है आगे फ्यूचर में क्या स्कोप? मैं आपको ऑनेस्ट कहता हूँ, हर उस चीज़ का स्कोप है जिसमें आप अच्छे हैं, और हर उस चीज़ का स्कोप नहीं है जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। मतलब कोई बंदा आप कहता है यार जो बंदा ना इसको डिजिटल, सो माय सिस्टर इन लॉ शी इज अ डेटा साइंटिस्ट, तो मैं उस दिन लास्ट में गया तो उन्होंने कहा कि मैं वो लोग नहीं मिल रहे जो डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस पढ़ा सकें, बड़े लोग मिल जाते हैं पर ये नहीं मिलते। तो आई टोल्ड हर, मैंने कहा ये तो बड़ी डिमांड है तुम्हारी, लेकिन वो डेटा साइंस मैं पढ़ लूँ, आई कैन कंप्लीट अ डिग्री बट आई विल बी अ बैड क्या बुरा फेलियर होगा। So that's not something that drives me. I just want makes, मैं इंफॉर्मेशन का यूज़ करना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन आ रही है हर तरह की, ये उसको मैं बैठ के एल्गोरिथम लगाऊँ, उसकी साइंस लगाऊँ, उसके बाद लॉजिक लगाऊँ, not my cup of coffee. I am somebody who really wants to use that information. So अगर आप किसी चीज़ में हैं which is thing that you really good at, उसका स्कोप है, और वो चीज़ आप कहेंगे नहीं इसको मार्केट में ना जो मार्केटिंग के सेल्स के लोग पड़े हैं। आस्क मी व्हेन आई इंटरव्यू पीपल लॉट ऑफ टाइम्स है कि यार दे आर वेरी ऑर्डिनरी पीपल, इससे बहुत अच्छा ये बंदा इस जगह बहुत अच्छा होगा बट ही इज ट्राइंग फॉर समथिंग एल्स, सो जस्ट बी गुड। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि आप लोग लेट्स से 50-100 का बैच निकलता है ना, हर यूनिवर्सिटी के इतने नहीं करते। यू हैव मोर देन 110 डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, मे बी द नंबर हैज इंक्रीज फर्दर, पर इतने 100 से ऊपर ही हैं। 100 कंपनी अगर एवरेज होंगे आधे भी हैं यूनिवर्सिटी MBA की या BBA की डिग्रीज दे रहे हैं, मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड देन दिस इज द नंबर दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। नंबर ऑफ जॉब्स वे लेस। नो इसका क्या मतलब है कि मे बी आप समझ रहे हैं ये आपको कंपटीशन है, योर कंपटीशन इज बियॉन्ड दिस बिल्डिंग, इट इज बियॉन्ड दिस सिटी, इट इज बियॉन्ड दिस कंट्री, एंड बिकॉज इफ यू आर नॉट रियली गोइंग टू से यार मैंने कम्पीट उससे भी करना है जो MIT से स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ के आ रहा है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ के आ रहा है, साइड स्कूल ऑफ बिजनेस से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहा है, जज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ के आ रहा है कैम्ब्रिज के, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड। और मैं आपको बताऊं, मैंने पहली दफा एक दफा जॉब के लिए इंटरव्यू किया, देयर आर 43 ग्रेजुएट्स फ्रॉम लम्स, आई डिड नॉट हायर एनी वन ऑफ देम, आई हायर्ड समबडी हु वाजंट अ लम्स ग्रेजुएट, हु वाज अ बैरियर ग्रेजुएट। तो मेरे लिए CV में इंपॉर्टेंट है ओके दिस गाय इज फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, बट दैट्स one data point only. I will ask you questions and I will tell you in 3 to 5 minutes yeah, whether you have the chance or not. आप कहें मैंने उस जगह पे डिग्री की थी, स्पेशलाइजेशन बड़ा स्कोप था, मैंने जनाब उस फील्ड में आया हूँ जिसमें बड़ी ज़्यादा नौकरियाँ होती हैं बट बहुत ज़्यादा लोग भी होंगे, you have to accept ये that is the only scope if you ask me। जी आपको BBA के स्टूडेंट 48 सब्जेक्ट पढ़ रहा है और MBA के स्टूडेंट हमारे यहाँ जो बेसिक है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ स्टूडेंट को लेके
और ये मैं थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन अगेन. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है. सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, आई डोंट नो वेदर ये यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है ना. अभी जैज़ ने गवर्नमेंट साहब मिलके नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया इस्लामाबाद में, कराची में बना, लम्स में एक है इंक्यूबेशन सेंटर. देखिए, रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट आवर इकोनॉमी एंड आवर मार्केट्स आर नॉट ग्रोइंग फास्ट. Either they are not growing or they are not growing fast. The number of people that we give admissions to, the number of people that we graduate and they go into the market is many times more than the jobs there. So entrepreneurship, startup culture is not an option anymore. आजकल बहुत सारे लोग, and we took five groups to, or 5 entrepreneurial groups to Barcelona में होता है 4YFN, 4 years from now. 4YFN. 2 of them made it to the top 10 in the world. One of them was interviewed by Wall Street Journal and he's got funding into around $1 million. बिल्कुल इस तरह की ग्रेजुएट. लेकिन समझ आ गई कि यार एक तो ये ना कि नौकरी आपका एप्टीट्यूड ही है कि आप खुद कुछ काम करना चाहते हैं. But then you have ideas. The good thing is that startup culture is really budding right now in Pakistan. So I agree with you. We don't. सिर्फ एक सब्जेक्ट्स की बात है ना कि आप सब एंटरप्रेन्योर के 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे, बट इट्स मोर अबाउट दैट सिस्टम दैट यू हैव टू कल्टिवेट इन यूनिवर्सिटी लाइक इंडिया, जिसमें लोगों को पता चले कि यार सो ऑल दीज पीपल हु आर बिकमिंग मिलियनेयर्स एंड दे आर बिकमिंग द व्हाट्सएप को आपको पता है कि हाउ मच वाज इट सोल्ड फॉर $19.5 billion. अब आपको व्हाट्सएप जैसे कई ऐप्स मान जाएंगी, बट वर यू द वंस दैट क्रिएटेड दैट and were you the ones in the market at the right time? No. इसी तरह एक लम्स में भी वो इंक्यूबेशन वाला काम कर रहे हो. I think water training sort of कोई उन्होंने चीज़ की है. There are so many problems that you can identify and say कि यार मैंने इस प्रॉब्लम का solution निकाला. Opportunity is immense. So as I said, entrepreneurship is not an option anymore. The business schools, the students, everybody has to start thinking beyond the jobs. They will not all get the jobs. That should be very clear. And for those who don't, they need to have something कि अच्छा हमने कुछ करना है, क्या कर सकते हैं. तो कल्चरल चीज़ें भी डेवलप करनी चाहिए from very outset of the schools. One more thing मैं ऐड करूँगा इसका चाइना हमारे पास सीटेक में आ रहा है या फला आ रहा है. Some people take it negative, लेकिन इन्वेट कर जाएगा, फला हो जाएगा. हम बिल्कुल श्रीलंकन मॉडल जो होता था, मॉडल था, वो हमारा ना चलता. तो हम कहेंगे कि हमारे फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है या क्या ड्रॉबैक्स आएंगे. I think merits दोनों चीज़ों पे, to be honest, मैंने काफ़ी देख रहा हूँ आजकल, just learning more and more about CPAC these days, but I think इसके दो eventual हो सकते हैं. देखिए, एक लोग कहते हैं कि पाकिस्तान will be subjected to an onslaught like East India Company had when the Britishers came to subcontinent. The other is great opportunity. हमारे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एंड में होगा क्या. Opportunity इसलिए बहुत ज़्यादा है कि देखिए Chinese have a certain work ethic because of which they are doing what they are doing. They are really growing all over the world. दुनिया में सबसे खूबसूरत जगहों पे जाए ना आपको Chinese नजर आते हैं. So for example, you go to Vancouver, Canada, 83% एक शहर है Richmond, 83% लोग Chinese हैं. कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, अर्वाइन एक जगह है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है. उसका नाम जो आप अक्सर लोग मजाक करते हैं, हम लोग जो जाते हैं, उसका नाम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज इमिग्रेंट्स. UCI बनता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्वाइन, कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज इमिग्रेंट्स. दुनिया में खूबसूरत जगहों पे चले जाए चाइनीज और ये इत्तेफाक नहीं है, दैट्स अ प्लान्ड थिंग. ना अब मसला क्या हो रहा है कि अगर आप हम लोग एक दो तरीके हैं, वो आ रहे हैं आपको इस्लामाबाद में भी ज़्यादा नजर आएंगे, पाकिस्तान में भी ज़्यादा नजर आएंगे, एंड यू लेट देम टेक ओनरशिप ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. दूसरी आप कहेंगे ना वी आर रेडी एज वेल, देयर आर एक्टिविटीज हैपनिंग, देयर इज इन्वेस्टमेंट कमिंग, डैम्स बन रहे हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद इट? आर वी गोइंग टू सी के इन्होंने कैसे किया एंड वी स्टार्ट डूइंग सम ऑफ द गुड थिंग्स दैट दे हैव डन, राइट? और वी जस्ट लेट इट गो एज दे डिड. देयर विल बी अ टाइम उनका इंटरेस्ट है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, दे कैन टेक ओवर लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज वेल दे हैव. सो मेरा ख्याल है कि वो जो ये CPAC का रूट बन रहा है, जो आपकी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कमर्शियल है, वी कैन रियली गेट इनटू दैट एक्टिविटी एंड स्टार्ट बिल्डिंग न्यू बिजनेसेस. नए एक्सपोर्ट बनेंगे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनेंगे, ड्यूटी टैक्सेस स्टेशन के इंसेंटिव्स होंगे, बिजनेस सेट कर सकते हैं, हमारे लोकल लोग कर सकते हैं. बट अगर हम ये करना चाहिए, चाइनीज़ ने जो 50 साल में अचीव किया वो उतनी कि हम प्रोडक्ट अगले दिन बना लेंगे,
और इंतजार करते रहेंगे कि जब तक नहीं बना सकते उनको बनाने दें, कभी नहीं हो सकेगा। एंड इट्स नॉट दैट पाकिस्तानी US is facing this issue. बहुत सारे लोग इशू करेंगे because their pace, the GDP growth is 7 to 8% of economy of that size compared to the rest of the world, कुछ भी नहीं। So I think India is one example। हमारे सब चैलेंज ये कि तो हम लोग वैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो सारे हैं, but I think this is for me a very good opportunity, but if we just let go of this we will be in a difficult state, मेरा ख्याल ये just my assessment। Enough? Thank you very much for the time. सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इवन फैकल्टी के लिए भी थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग सेशन एंड आई होप कि हम फर्दर भी एक क्लासरूम क्रिएट कर सकेंगे। अगर स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो आपसे हेल्प आउट लेना चाहें तो हम एक क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर भी रिगार्डिंग जैज एंड हमदर्द यूनिवर्सिटी, उससे उस लिहाज से भी वी कैन सिट एंड डिस्कस। आई रिक्वेस्ट खालिद साहब to please come on stage and present shield of honor to our chief guest. As you are Hamdardi, and it will remind you daily of Hamdardi.